હું સંભાળું છું. દેટ ઇન્ક્લુડ્સ મુંબઈ, પુણે અને ગુજરાત, એન્ટાયર ગુજરાત. હું તમને લોકોને ડૉક્ટર બત્રાસ હેલ્થકેર કંપની વિશે થોડું બ્રીફ કરું અને પછી આપણે આગળ આજનો ઇવેન્ટ વધારીશું. સો ડૉક્ટર બત્રાસ હેલ્થકેર એ એનું ઇન્સેપ્શન 1982થી થયું અને અત્યાર સુધીમાં વી આર એક્ઝિસ્ટિંગ 92 સિટીમાં છે અને આખા ઇન્ડિયા સિવાય 5 કન્ટ્રીમાં છે, ઇન્ક્લુડિંગ ઇન્ડિયા. અમારું અસ્તિત્વ બાંગ્લાદેશ, યુકે, બહેરીન અને યુએઈમાં પણ છે ઇન્ડિયા સિવાય. સો ઓવરઓલ Yes, look here. Great, sir. Thank you. Thank you. થેન્ક યુ. Thank you, Dr. हरेन. आप सबका नमस्कार. गुजरात मेरे लिए बहुत स्पेशल है, 2 रीजंस के कारण. पहले तो मेरी मम्मी गुजराती है, so I can understand Gujarati fully well, but she never taught me to speak. But I can understand everything very well, including what some nice Gujarati plays in Gujarati movies. Secondly, जो डॉक्टर बत्रास की जो हिस्ट्री है, टुडे वी आर 200 क्लिनिक्स और हमारा चौथा ब्रांच गुजरात में है. फर्स्ट वाज इन बॉम्बे, सेकंड वाज इन मॉरिशस, थर्ड वाज इन बैंगलोर एंड फोर्थ वाज इन बड़ौदा. So very early in the Dr. Batra history, Gujarat has played a very special role and accepted us. And when we opened the clinic in Ahmedabad, तब के Chief Minister Shri Narendra Modi ji थे, he came to inaugurate our clinic in Ahmedabad at that time. So there's a long association with the state and I'm very happy. मैं आपको बात करना चाहूँगा about what we are launching today. Is there a pointer or do I have to tell you to clean this? Thank you. So today we are launching the world's latest hair growth treatment. और इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा. चलिए नेक्स्ट स्लाइड. इस ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा. थैंक यू. तो पहले आपको बताना चाहूँगा अबाउट हेयर एंड माय लव फॉर हेयर. वैसे डॉक्टर हरिन ने कहा आई एम अ ट्राइकोलॉजिस्ट फ्रॉम यूके. I have studied from UK Trichology Society of London. It's the world's leading body for hair research and hair study. And that is where in 2006 जब मैं वहाँ पढ़ने को गया, that's the time I really fell in love with the science of hair. Basically ये hair loss के कुछ थोड़े common कारण हैं. The most common cause of hair loss, one of the most common causes is anemia. Lots of people lose hair. I've been in practice since 2001, so now 23 years. और 23 years का मेरा एक्सपीरियंस है उसमें a lot of patients, I would say 40% of patients who come for hair loss, उनके बाल झड़ते हैं because of low iron level. So it's that high. और ये ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा होता है than in males. The second one is stress and lifestyle. Stress. Most advanced hair regeneration treatment, extremely effective even on hereditary hair loss. Hair loss का रीजन कोई नहीं हो. हाँ, रीजन कोई भी हो, स्ट्रेस, hormonal या hereditary, एक्सपोजर का लेटेस्ट ट्रीटमेंट ही है सबका आंसर. No more worries for hair loss, क्योंकि मैं हूँ. मेरा मतलब डॉक्टर बत्रास है ना. हेयर लॉस को फाइनली करेंगे. बाय बाय. So this is Dr. Batra's excision. मैं थोड़ा आपको समझा दूँ. And next is इसमें growth factors 1400 हैं, which are about 100 times more than any other treatment. So it's very very effective. So what is the science of it? चलता कैसे? I'll explain to you in a very simple way. This is based on the science of exosomes. Exosome is the latest medicinal delivery method. Exosome एक छोटा सा सेल होता है, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स और दवाइयाँ रहती हैं. दिस इज अप्लाइड ऑन योर स्कैल्प. ये जो एक्सोजन है ये बेनिफिट हुआ है कि मेरी जो हेयर फॉल है इट हैज़ रिड्यूस टू सम एक्सटेंट और मेरे स्काल्प एरिया एंड ऑलमोस्ट दिस फोरहेड एरिया में मैंने बेबी हेयर ग्रोथ भी देखा है. आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि ये हेयर ग्रोथ है. सो आई एम ग्लैड दैट दिस थेरेपी इज वर्किंग विथ मी. सो थैंक यू डॉक्टर बत्रास. तो 3-4 सेशंस में डेमोन्स्ट्रेट कि
how your exogen treatments are done. So if you can just take us quickly through the steps and let us know a little bit about the process. ये ट्रीटमेंट लास्ट होता है 30 to 40 मिनट्स तक. हम आपको सिर्फ 2-3 मिनट का डेमो दिखाएंगे so that you understand the various steps are. Please Zoya, thank you. I'm Zoya Khan. I like to very health authority study therapist here in Dr. Bhattacharya in Dubai Healthcare City branch. Today I am very excited to walk you through our revolutionary exogen treatment. Our second expedition for hair rejuvenation. This procedure has 4 steps and it lasts for 40 to 45 minutes. Moving on to our first step, which is called oxygenation. Here, we provide the scalp with the direct oxygen, cleansing the scalp thoroughly. This process helps us to get rid of all the dirt particles, open the pores, and create the perfect environment for the freedom of toxins. This step lasts for 5 minutes. Moving on to our second step, which is serum absorption. Here we place our serum, which is exogen serum, packed with 1,470 hair growth factors, which stimulates the hair follicles and promotes hair growth. Along with that, we are going to use our Dermapen, which gently infuse the serum into the scalp. Our Dermapen allows the serum to penetrate deeply, stimulating the scalp and activating the damaged hair cells. This is the most vital part of our procedure and it lasts for 20 to 25 minutes. Moving on to our third step, which is called electroporation. In this step, we are going to use a warm probe. In this step, we are going to massage our scalp gently. This step allows serum to push deeper into the scalp. This process is non-invasive and has no discomfort, yet it is very effective. This step lasts for 10 minutes. Moving on to our final step, which is cooling. In this step, we are going to use the cooling probe. It helps to close the pores and leaving you feel refreshed and relaxed. Thank you, and it also lasts for 10 minutes. Yeah, thank you so much. Thank you so much Zoya. Sorry. करते हैं हम होम्योपैथी का कोर वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं जो है सेफ्टी, एफिकेसी और नो साइड इफेक्ट्स. ये एक ट्रीटमेंट है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती बिल्कुल. एक साउथ कोरियन ट्रीटमेंट है, वहाँ पे पूरा इसका रिसर्च किया गया है, इंटरनेशनल पेपर्स बहुत से लिखे गए हैं इस पे, इसकी एफिकेसी पे. फिर हमने इसे इंपोर्ट किया इंडिया में. और जब भी हम कुछ इंडिया में लाते हैं तो हम इवन दो सब पेपर्स लिखे जाते हैं और पूरा है, हम खुद की क्लिनिकल क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल्स भी करते हैं अपने क्लिनिक में ऑन पेशेंट्स. और हमने 10 सिटीज़ में 10 पेशेंट्स लेकर 100 पेशेंट्स पे ये एक्सपीरियंस किया है. Sir, as you said that Ahmedabad is having the major problem, what could be the major reasons for that? That's very interesting. I have not researched fully as to why, but I can just tell you some examples. One example could be low iron level. Okay, I think that could be a reason in Ahmedabad. The second could be a lot of use of chemicals on the hair. These are some of the common reasons that we see. Because the more parlor procedures, जितना ज़्यादा parlor procedure करेंगे, जितना ज़्यादा chemical use करेंगे scalp पर, उनसे भी बाल झड़ते हैं. Third can be very strong genetic history also. These are the 3 most common. Dr. Harin, do you see anything in practice that is missing? In addition of sir has told, આપણા બધાની ખાસ કરીને અમદાવાદની વાત કરું તો ગુજરાતી લોકોની લાઇફસ્ટાઇલ, જેમ સરે કીધું ને, લાઇફસ્ટાઇલ એમને એડ કર્યું છે, કારણ કે લાઇફસ્ટાઇલ ઇઝ કોઝિંગ ધીસ. અને બીજું છે આપણું અહીંયાનું પાણીમાં ક્ષાર પણ વધારે છે, TDS. તો દેટ ઇઝ, એટલે એ પેલું ઘી, આગમાં ઘી નાખ્યું ને વધે, એ કામ કરી રહ્યું છે. દેટ ઇઝ નોટ ધ સાયન્ટિફિક કોઝ. Scientific cause is definitely genetically, hereditary and nutritional deficiency also. And what could be the side effect? Does it cause any diabetes, tumor or Alzheimer's? Hair fall? Yes, the treatment that exogen. No side effect at all. No side effect at all of the treatment at all whatsoever. How it is advantage over hair transplant? Very good question. So
So how is it advantage of hair transplant? So hair transplant is a good procedure, but it is not for every type of patient. Hair transplant works best when you have hair loss in the frontal area where there is no hair at all, where your hairline recedes. I'll tell you why. Number one, hair transplant में आप यहाँ के पीछे के बाल निकाल कर ट्रांसप्लांट करते हैं. There is a limit to कितने बाल निकाल सकते हो आप, because you're not growing new hair, you're just taking out hair from here and you're making a stitch. So the donor hair is limited, number one. Number two, अगर आप hair transplant ऊपर करते हो जहाँ पे you saw all these pictures where I showed you where patients were losing hair, there you can end up damaging your existing hair follicle. क्योंकि ट्रांसप्लांट में आप होल करोगे, आप इंसर्शन करोगे, फिर उसमें आप फॉलिकल डालोगे. नंबर टू. नंबर थ्री इज इवन इन अ ट्रांसप्लांट आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है टू सेव योर एग्जिस्टिंग हेयर. एंड नंबर फोर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड, इस ट्रांसप्लांट 1 या 2 सेशन में हो जाता है, पर उसका रिजल्ट 9 महीने के बाद दिखता है. इट इज नॉट एन इमीडिएट रिजल्ट. एंड नंबर 5 इस ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, और हर सर्जिकल प्रोसीजर में रिस्क होता है. It is not in every case, but in some cases of hair transplant there are cross infections. In some cases of hair transplant there can be swelling after the procedure, and in India we have seen in the newspaper where even 1 or 2 patients have died on the day. So this is a much easier procedure, it is a much safer procedure, and it is a much faster procedure, because जैसे आपने देखा those photos that I showed you, आप 4 सेशन में पेशेंट्स को रिजल्ट मिल रहा है. Now the sessions are once in 15 days, यानी कि 2 महीने में ये रिजल्ट मिल रहे हैं, जहाँ जाके हेयर ट्रांसप्लांट में 9 या 10 महीने के बाद मिलेंगे. सो दैट्स द एडवांटेज. So what are the costs compared to transplant? So the cost of this is about 5,000-6,000 rupees a session. It is an international treatment that we have imported in India. It is even much more expensive internationally. हमने इंडिया के लिए वॉल्यूम उनसे बात करके प्राइस रिड्यूस की है. It is 5,000-6,000 rupees a session. That's the rate. मिनिमम कितने Out of सेशन India, it is $2,000 per dollar per session. $2,000 per per session. session. तो सर आप ये एक बार ट्रीटमेंट ले लिया, सेशन ले लिया, उसके बाद कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जैसे कुछ शैम्पू या कुछ? मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा. मेंटेनेंस लिए होम्योपैथिक दवा लेनी पड़ेगी, सो दैट योर हेयर साइकिल्स आर बैलेंस एंड जो भी आपको गेन हुआ है वो गेन रहे. और आपने पूछा कि कितने सेशंस लगते हैं. टिपिकली 3 या 4 सेशंस या 4 सेशंस में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं पेशेंट्स के, ग्रोथ दिख रहा है. पेशेंट के हेयर फॉल पे डिपेंड होता है कि उन्हें कितने सेशंस लगेंगे, कि उसका उनका हेयर फॉल का स्टेज क्या है, उनकी बॉल्डनेस का स्टेज क्या है. पर टिपिकली 10 to 20 सेशंस के बीच में पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है. Does this excision treatment help in gray hairs also? No, it does not help in grey hair. Grey hair में there is loss of the melanocyte, or the melanocyte starts to lose its color and pigmentation. Treatments आ रहे हैं grey hair के लिए, but they're not well enough researched. So once they are researched, we will then see whether we want to introduce them into India. So at the moment for grey hair, there's no real effective. इंडिया में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल का? Hair fall का problem wherever I have gone, I have seen today in Ahmedabad the searches are one of the highest. Ahmedabad is one of the highest search volumes for people searching for hair loss. So I think that is a data point that we have. It's one of the highest. Yes. किसी का ऑपरेशन हुआ है, लाइक कीमोथेरेपी वगैरह होता है, तो उसमें हेयर होता ही नहीं है, तो उस स्टेज पे आपका ये ट्रीटमेंट जो है थेरेपी कितना इफेक्टिव रहेगा? तो कीमोथेरेपी में दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट रेकमेंडेड. एक्चुअली कीमोथेरेपी में हेयर लॉस क्यों होता है? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. जो आपके कैंसर सेल्स हैं वो बहुत क्विकली ग्रो होते हैं, फास्ट मल्टीप्लाइंग है. Chemotherapy attacks all fast multiplying cells. Hair is a very fast multiplying cell. That's why the hair also falls, because chemotherapy kills the cancer cell. It also kills the hair cells. So usually we recommend patients to take homeopathic remedy so that the ill effect of the chemotherapy is safeguarded. And after some time, जिनके बाल झड़ने वाले chemotherapy में, you can't do anything about it, but you can help to. Okay. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय बत्रा है. मैं डॉक्टर बत्रा क्लिनिक का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ. आज मैं अहमदाबाद आया हूँ एक
नई ट्रीटमेंट लॉन्च करने के लिए हेयर लॉस के लिए। ये वर्ल्ड की लेटेस्ट और बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसका नाम है एक्सोजन ट्रीटमेंट और ये ऑल टाइप्स ऑफ हेयर फॉल के लिए और ज़्यादातर की हेरिडिटरी हेयर फॉल के लिए, जेनेटिक हेयर फॉल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक बहुत आसान ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए। इसमें कोई पेन, साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। ये सेशन लास्ट हुआ है 40 मिनट्स के लिए और ये जो है ये एक बहुत साइंटिफिक और टारगेटेड ट्रीटमेंट है जहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल्स जो डोरमेंट हो जाते हैं, जो स्लो हो जाते हैं, जो उगते नहीं, उन्हें ग्रो करने के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद ट्रीटमेंट है और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। सिर्फ 3 या 4 सेशन में पेशेंट्स को हेयर ग्रोथ दिखाई दे जाता है। ये साउथ कोरिया से इम्पोर्टेड की है। जैसे मैंने कहा, वो विश्व की सबसे लेटेस्ट, सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। सर कितने मिनिमम सेशन चाहिए और पर सेशन का कॉस्ट? जो मिनिमम सेशंस चाहिए वो जैसे मैंने कहा 3, 4, 5 सेशन में पेशेंट्स को रिज़ल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे फास्ट है कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो। मिनिमम सेशंस पेशेंट के हेयर फॉल टाइप और एज पे डिपेंड होता है। तकरीबन 10 से 20 सेशन की ट्रीटमेंट लास्ट होती है डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स एज एंड पेशेंट्स टाइप ऑफ हेयर लॉस। और द एवरेज कॉस्ट ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है इंटरनेशनली। हमने इसे इंडिया में इंपोर्ट किया है और इंडिया के लिए स्पेशल रेट्स हैं विच इज़ अबाउट 5,000 to 6,000 रुपीज़ पर सेशन। थैंक यू। गुजराती में સર અમદાવાદના ડેટામાં કહી શકો સર્ચનું કરું મોબાઈલ સર્ચમાં જોન ડૉક્ટર બત્રાસમાં હું ડૉક્ટર બત્રાસ સાથે 25 વર્ષથી સંકળાયેલો છું। આજે મને બહુ આનંદ થાય છે કે આપણા ગુજરાત શહેરમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદમાં પહેલીવાર વર્લ્ડની લેટેસ્ટ અને નવી મોસ્ટ એડવાન્સ વૈજ્ઞાનિક રીતે માન્યતાવાળી ટ્રીટમેન્ટ અમે એક્ઝોઝન લોન્ચ કરી રહ્યા છે। અને ખાસ કરીને જેમ આપણે આંકડા બતાવ્યા કે ગૂગલ સર્ચમાં સૌથી વધારે ઇન્ડિયામાં અમે જોયું કે અમદાવાદમાં હેર લોસના કેસીસ વધારે આવે છે। સ્ટાર્ટિંગમાં 5 વર્ષ પહેલાં અગર હતા તો 2,000 થી 2,500 ગૂગલ સર્ચિસ હતા, જે અત્યારે 40,000 થી 50,000 ગૂગલ સર્ચિસ થઈ ગયા હેર માટે, જે બહુ મોટા આંકડો કહેવાય કારણ કે નેશનલનો આપણને 22 લાખનો આંકડો છે, એમાંથી આટલા ટકા ગુજરાતના છે। સો અમદાવાદ શહેરો માટે અને ગુજરાતી લોકોના માટે મને આનંદ થાય છે કે જે આ એક્સોજન નવી લેટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ છે જેનાથી 3 થી 4 સેશનમાં જ રિઝલ્ટ દેખાવા માગે છે અને ઓલ ટુગેધર આ બિલકુલ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વગર, નીડલ વગર, બ્લડ વગર અમે આપીએ છીએ, એકદમ સેફ છે। ઓકે, થેન્ક યુ સર। પેશન્ટ માટે જે સેફ છે એ જ કરીએ છીએ અને બધામાં અમે હોમિયોપેથિકનો પણ પ્રયોગ કરીએ છીએ, એટલે જે આડઅસરવાળું છે એ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ રાખતા નથી અને એક્ઝોઝનની બિલકુલ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ નથી।